होपफुली वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों का, बट आई आंसर दैट क्वेश्चन अगेन. अगर हम फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू कोड दिस थिंग, अगर ये चीज़ ऑलरेडी किसी एक रिस्पोंडेंट ने ये इस चीज़ की बात की हुई है, लाइक इस सेंटेंस से मैंने थीम एक्सट्रैक्ट किया जॉब लॉस, कि दिस रिस्पोंडेंट इज हैविंग डिप्रेशन ड्यू टू हिज जॉब लॉस. तो मैं, और जबकि ये जॉब लॉस की बात मेरे ऑलरेडी प्रीवियस रिस्पोंडेंट्स ने भी की थी, तो मैं इसको इसी में कोड कर दूँगी. और फॉर एग्जांपल इसने जॉब लॉस की नहीं, इसने किसी और फैक्टर की बात की है विच इज़ कॉजिंग डिप्रेशन इन हिम, तो मैं एक नया कोड बना लूँगी. ऑलराइट, so we were done till coding. After coding, the very important step is to run queries. Queries से बेसिकली हम करते क्या है कि we interpret our results through queries. Queries के थ्रू हम अपने results को interpret कर सकते हैं. So how we can run queries? Just note down these steps with me. I'll go in Explore ribbon tab. In Explore ribbon tab, first query which I'll run is text search query. Guess who's raising his hand? मैम आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा. मुझे तो सबकी वॉइस क्लियर है. आप काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लीजिए. इज इट ओके? मैम आवाज थोड़ी कम आ रही है. Okay, I think it's clear now. So the text search query is the first query which I am going to run. I'll simply go in Explore. Where is Explore? It is present in the top ribbon bar. I'll just simply click on text search query. In the text for which I want to search my query, I'll search that text over here. For example, stress is causing depression in different human beings. I'll simply write stress over here and I'll run query. Now here the the word stress is used by these respondents. In field notes it is used a lot, in focus group by respondent 2, and in one picture it is used. So how I can present my tree map? Tree word tree option is present in the very right side, the last option. I'll simply click on that, and here is my word tree. Now I can reduce or increase the size of this word tree by using this context option. From here I can increase or decrease the word limit as according to my choice. What word tree tells us? हर वर्ड ट्री एक अपनी एक लॉजिक दे रहा होता है. लाइक जेंडर इश्यूज, इन जेंडर इश्यूज द रोल ऑफ सेक्स स्ट्रेस कैन लीड टू डिप्रेशन. The role of stress can lead to depression, or we can check any other sentence similarly. Circumstances is like to trigger stress in you and many do others. Similarly, we can increase the text size. Now how we can just import this into our computer so that we can place it in our analysis or in our thesis. We'll simply right click on this and export word tree. From here I can export word tree in my computer wherever I want, and I'll use this word tree in my thesis. Okay, so very next query which I'll run is the next query. I'll repeat the initial step same. I'll move in Explore ribbon tab. In Explore, I'll move to word
frequency. Word frequency will tell us that which word is used how many times, what is the frequency of each word. Here is the word display, that word count, which this will be presented. I can reduce or increase this word count. For example, 1000 is very much, as we are doing an example. So here I'll take 300 words and I'll simply run this query and I'll move towards this word cloud. Software will take some time to run this query according to the size of word cloud which you have selected. Yes, here is the word tree. I can select different types of designs according to my choice. For example, I am selecting this over here. Okay, so this is the word cloud. You can go with different type of styles. Now here is the option of tag clouds as well. I'll show you that this is the word tag cloud. Why word tag cloud is used rather than just using word tree? So there are some words like cause and just, life. I don't want these words. God. These are just not related to my study. So I'll simply select those words. I'll right click on them and add to stop word list. Okay, so these words will be blocked. I'll simply do okay, and the very next time while I'll use this thing, these words will not appear. All selected words are already. So by this way we can just block these words, and these words will not appear in our next word cloud. Now this cloud is not having those words. Similarly, as I have exported the word tree, I'll export the tag clouds as well. I can export it like this and I can use this in my thesis. The timing I'm going to cancel it. And now we are just moving to the very last part of our results, and which is also an important part. I'll again move to the explore ribbon tab. Over here I'll move to hierarchy chart. Over here I'll select hierarchy charts. The style which I want is this, and I want my codes which will present my these things. If you want something else, you can select those things. I'll simply do next and finish. Yes, my this hierarchy chart is presented over here. What is it telling us? That job loss is causing more depression in people as compared to tax rate or insomnia. Family problems are also causing depression as compared to mental pressure. Mental pressure is having less effect as compared to peer pressure or stress. Okay, so similarly, I can export this chart as well. Desktop. So this was all about NVivo. Do you people have some questions? You may ask those questions from me.
Is somebody having any question? No, man. Okay, so this was all about NVivo. The thing with the thing which is recommended is that you people may collect all your desired data. All the data should be collected, and then the analysis should be done, and you people may install in Vivo, because as if you have not purchased in Vivo, your license trial will be only for 14 days. So after 14 days, you will not be able to use a Vivo. Then you have to reinstall your window and go with all that process. So I'll recommend you people कि आप अपना डेटा पहले fully अच्छे तरीके से collect कर लें, उसको क्रॉस चेक कर लें कि योर डाटा इज़ एक्यूरेट। फिर आप NVivo इंस्टॉल करें और अपना एनालिसिस परफॉर्म करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जब एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि डिज़ायर्ड आउटकम्स तो आए ही नहीं हमारे पास, हायरार्की चार्ट तो कुछ और ही आ रहा है जो हमें चाहिए था, हमारे हाइपोथेसिस सपोर्ट ही नहीं हो रहे। तो वो फिर दोबारा से डाटा कलेक्शन और उसकी मॉडिफिकेशंस की तरफ जाते हैं, तो उससे तब तक इन वीवो एक्सपायर हो चुका होता है। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक दफ़ा अपना फुल फ्लेज एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर लें और उसके बाद इन वीवो इंस्टॉल करके तो अपना एनालिसिस परफॉर्म करें। मैम एनवीवो सॉफ्टवेयर हमें डिपार्टमेंट की लैब से नहीं मिल जाएगा? डिपार्टमेंट की कंप्यूटर में लैब्स इंस्टॉल हुआ हुआ फिर? मिल जाएगा आपको डिपार्टमेंट की लैब से, बट दे विल प्रोवाइड यू इन वीवो 10, जिससे ऑलरेडी सर फरमान ने शायद आपका वेरी फर्स्ट लेक्चर उसी पे लिया था, इन वीवो, दैट वाज इन वीवो 10। यस मैम। और यस मैम। वो बहुत ही पुराना वर्जन था, एंड आफ्टर 10 अभी जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ इन वीवो 12, एंड दिस इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, और हमारा डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। तो आप, I'll recommend, rather than using NVivo 10, just do your analysis on NVivo 12. This is having more functions. Your hierarchy chart will be more colorful, and you can give more designs of word, trees, and tag clouds in NVivo 12 rather than its previous versions. Alright, so any other question? मैम जैसे हम आपने हायरार्की चार्ट बनाया है, जो सारी चीजें बनाई है, पहले हमने उसके वर्ड्स देखे हैं, वर्ड्स कितने यूज हुए हैं, जैसे कोई भी हमने देखा पहले स्ट्रेस वगैरह। Hmm. तो मैम उसको फिर हमने एक्सपोर्ट करके सेव करके फिर दोबारा हमने जो वर्ड की फाइल बनानी है उसमें डाटा इंक्लूड करना है या फिर कैसे क्या करना है? ये अभी मैंने एक्सपोर्ट किए हैं, words are exported, let me check. एक्सेप्ट अभी मैंने उसको एक्सपोर्ट करके अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया था, एंड हियर इट इज़ प्रेजेंट। आई कैन सिंपली प्लेस दिस टेक्स्ट सर्च क्यूरी इन माय एनालिसिस और इन माय थीसिस और एनालिसिस सेक्शन ऑफ माय स्टडी। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी, या आई कैन सिंपली पेस्ट दिस पिक्चर इन दैट वर्ड डॉक्यूमेंट, or I'll tell that in my results section that stress is caused by this. Most of my respondents are saying that stress is by these hormonal changes or these type of things. Stress can lead to depression. इस तरह से हम अपने रिजल्ट्स में बता देते हैं। अभी तो मैंने एक जेनेरिक सा डाटा लेके उस पर किया है, जब आप अपना एक्यूरेट डाटा लेके करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा वर्ड ट्री बन जाता है, और सेम इज़ द केस विद दोज टैग क्लाउड्स एज वेल। मैम एनवीवो सॉफ्टवेयर में हमने सब कुछ करके, मैम हमने जैसे कि पहले हम सब कुछ किया, उसमें लास्ट में हम हायरार्की चार्ट से हमारा रिजल्ट आएगा। मैम जैसे कि आपने बताया कि ट्री बना होगा, लास्ट में हायरार्की हमारा ये रिजल्ट है। चार्ट नहीं, सिर्फ हायरार्की चार्ट नहीं, अगर आप एक्सप्लोर में भी, जैसे मैंने बताया कि एक्सप्लोर रिबन टैब में जब जाएंगे, टेक्स्ट सर्च क्यूरी से तो पता चल जाएगा कि हमारे कौन से वर्ड्स को ज़्यादा रिस्पोंडेंट्स ने एम्फेसाइज किया है। पहली फाइंडिंग तो मैं ये बता दूंगी, ठीक है, कि डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय स्ट्रेस एंड जॉब लॉस। ठीक है, उसके बाद मैं अपना वर्ड फ्रीक्वेंसी से अपना वर्ड क्लाउड बना के उसको एक बहुत अच्छी लुक देती है क्वालिटेटिव स्टडी के एनालिसिस में, कि ये हमारा वर्ड क्लाउड है, और इसके डिफरेंट वेज होते हैं जस्ट टू प्रेजेंट योर रिजल्ट सेक्शन। उसमें हम बता देते हैं कि दिस इज द वर्ड क्लाउड, वी कैन सी बाय द साइज ऑफ द वर्ड्स लाइक डिप्रेशन,
Let me do that. That will be 200, and I'm simply run the query word. उससे हम ये बता देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेस या डिप्रेशन का वर्ड इन्हांस हुआ है, साइज में बढ़ा है, तो दिस फैक्टर इज कॉजिंग मोर डिप्रेशन इन पीपल, लाइक factors depression, these things, the brain is affected from depression. इस तरह से हम अपने, अभी तो मैंने जेनेरिक डाटा लिया हुआ है, इस वजह से इसको थोड़ा हम जूम करके अगर देखें तो पीपल में थिंक के डिफरेंट प्रॉब्लम्स उनके पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि हमारे रेस्पोंडेंट्स के अकॉर्डिंग उनमें डिप्रेशन, दीज फैक्टर्स आर कॉजिंग डिप्रेशन इन दैम। ऑलराइट, सेम इज़ द केस विद हायरार्की चार्ट। हम हायरार्की चार्ट जो एक्सपोर्ट करेंगे हम उसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अटैच करके बता देंगे कि एज job loss is having a great covering a more area, so job loss is affecting the most on the mental level of people that are the patients of depression. All right, यस मैम। so is there something else, or should we end this session? मैम यस मैम, ठीक है, समझ आ गई। Okay, so thank you so much. Thank you for your time and patience.